Assalamu alaikum. We're meeting at Bahria again today, but for a special event. Today is the launching of Coffee Wagera in Bahria town, Karachi. Coffee Wagera is no ordinary coffee shop. I'll explain why as we go further. Let's step inside. Every customer is greeted with passion, like the one in the background. You can feel the energy once you step in, not a single moment spent idly. The place is ensconced in coffee in both smell and visuals. It's like the Narnia of coffee. Both items were delicious. Texture, taste, sweetness, freshness and presentation were excellent. Highly recommended. Let's check out the downstairs. This is the workstation area for students, accompanied with a power socket. A very youth-centric and indulging atmosphere can be found. Time for a love potion, a little sweet and spice. Throw it all in a cauldron, mix it up real nice. Fire in my eyes, stir counterclockwise. I dream of you all night. Feel with the emotion, follow the signs. With this love potion, you will be all mine. I'm pulling you closer to me. You're finding it harder to breathe. The magic is taking over your mind entirely. I'm the only one that you see. I got what you want, what you need. Before you know it, you are falling deep in love with me. Little sweet spice. Made a love potion for you. Little sweet spice. Made a love potion for you. This is the moment, no turning back. One drop on your lips and the spell will take effect. Under the moonlight, stay close to my side. We're burning so bright. Oh, 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 oh. Feel the emotion. Follow the sign. Feels great to have the place to myself. But this is only due to corona preventive measures. People are either seated outside or use takeaway. Nonetheless, it is a very spacious and comfortable seating area. I'm the only one that you see. I got what you want, what you need.
This is where the magic happens. A very cordial staff helping out the customers. A huge line of customers can be seen gathering outside. Messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget. You might have noticed the absence of stoves. That is because no cooking takes place here. Why do I, baby? Why do I love the way you always leave me? Why do I, baby? Why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby? Why do I love the way you always leave me? Why do I, baby? Why do I love the touch but never love the feeling? Behind me is Mush Punjwani, founder of Coffee Wagera. Let's interview him. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कॉफ़ी वगैरह। आज हमारी लोकेशन नंबर 8 लॉन्च हुई है बहरिया टाउन में, जिसका बहुत अरसे से बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे। आज फाइनली हो गया है। स्पेशल ऑफर्स चल रही हैं। 6 बजे तक फ्री लाटे और कैपुचिनो मिल रही है। अगर अभी ये पोस्ट हो गया 6 बजे से पहले तो आ जाए फ़ौरन से। और रात 12 बजे तक ऑफर्स चल रही हैं। तो और बताइए। और फ्यूचर भी बताएं कुछ ऑफ़र्स के बारे में, अगर आपका कोई प्लान है आगे फ्यूचर में कुछ ऑफ़र देने का। हमारी जो रेगुलर ऑफर्स होती है ना, वो स्टूडेंट डिस्काउंट होता है, सीनियर सिटीजन डिस्काउंट होता है, मिलिट्री पर्सनल के लिए डिस्काउंट होता है। तो वो हमारी रेगुलर ऑफर्स होती हैं। और सबसे ज़बरदस्त बात ये होती है कि हमारी एक ऐप होती है कॉफ़ी वगैरह के नाम से। जब वो ऐप डाउनलोड करते हैं तो हर परचेज़ पे आपको पॉइंट्स मिलते हैं, विच इज़ लाइक 10% बैक, मनी बैक एवरी टाइम। वेरी नाइस। अच्छा, व्हाट एग्जैक्टली मेक्स दिस प्लेस यूनिक और डिफरेंट फ्रॉम अदर कॉफ़ी शॉप्स इन कराची? देखिए, रेस्टोरेंट और कैफ़े दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर किचन हो, कुकिंग हो, नाश्ता ब्रेकफास्ट डिनर सर्व हो रहा हो तो वो होता है रेस्टोरेंट। हमारा रेस्टोरेंट नहीं है, यहाँ पे किचन नहीं है, कुकिंग नहीं होती है, सारा फोकस बेवरेजेस के ऊपर होता है और कुछ स्नैक्स सर्व होते हैं, तो मोस्टली बेवरेजेस। तो ये तो पहली बात हो गई कि ये जो है ये प्योर कॉफ़ी शॉप है। यहाँ पर आप ब्रेकफास्ट लंच डिनर के लिए नहीं आते, यहाँ पे आप आते हैं दोस्तों के साथ चिल करने के लिए, बैठ के बोर्ड गेम्स खेलने के लिए। ऑफ कोर्स उस वक्त जब डाइन इन ओपन हो जाए। यहाँ पर वर्क बेंच लगी होती है नीचे, जिसपे स्टूडेंट्स बैठ के काम कर सकते हैं, फ्रीलांसर्स काम कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, राइटर्स आके लिख सकते हैं। तो वो वर्क बेंच अवेलेबल होती है, पावर सॉकेट्स, यूएसबी सॉकेट्स, वाईफाई हमेशा चल रहा होता है। वाईफाई ना चले तो पता है क्या होता है, आपकी कॉफ़ी फ्री हो जाती है। तो वो एक हमारा फीचर है जो इसको यूनिक बनाता है, हमारी वर्क बेंच वाला फीचर। ये यहाँ पे वाटर कूलर नज़र आ रहा है आपको, ये भी यूनिक है। तो बहुत सारी यूनिक चीज़ें हैं कॉफ़ी वगैरह की। ये शायद पूरे पाकिस्तान में, अब कराची में पहला कॉफ़ी शॉप है जहाँ पे पानी नहीं बेचते हम। क्यों नहीं बेचते? क्योंकि बहुत बड़ा वेस्ट प्रोड्यूस होता है प्लास्टिक की बोतलों से, जो हमें नहीं पसंद है। तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारे मुल्क में कचरा ऐड हो, तो हम पानी बेचते ही नहीं हैं। पानी फ्री में मिलता है यहाँ पर। वेरी नाइस। अच्छा, अपनी लोकेशन के बारे में कुछ बताएं, ये आपकी ब्रांच नंबर कौन सी है और इस लोकेशन के बारे में कि कहाँ पे लोकेटेड है? जी, तो हमारी जो सबसे पहली आउटलेट थी वो बदर कमर्शियल में थी, नहीं है डिफेंस में। और उसके बाद हमने फ्रेंचाइजिंग प्लान लॉन्च किया उसके 1 साल के बाद, और उसके बाद सारी आउटलेट्स फ्रेंचाइज्ड हैं। तो उसके बाद मस्कन में आई एक, गुलशन इकबाल में, फिर 5 स्टार नॉर्थ नाजिराबाद में, फिर शरफाबाद बादराबाद में, उसके बाद क्लिफ्टन में, फिर उसके बाद हमने लॉन्च किया कॉफ़ी वगैरह ऑन व्हील्स गाड़ी में। तो वो जो है वो आई चंडीगढ़ रोड पे लॉन्च किया था। आजकल वो रात में बादराबाद पे होती है हमारा रिक्शा कॉफ़ी का। और उसके बाद हैदराबाद में लॉन्च हुआ नंबर 7, और ये 8वां है बहरिया टाउन। और इसके बाद आप अगला सवाल पूछने वाले हैं कि और कहाँ खोलने वाले हैं। तो कराची में पोटेंशियल लोकेशंस हैं, मलीर अभी बाकी है, गुलशन हदीद, मेमार,
और डिफेंस में जाएं तो फ़ेज़ 1, 2, 7, 8 बाकी है, मलीर कैंट और मलीर के बाहर वाला बाकी है, गुलिस्तान जौहर बाकी है। तो अभी कराची में कम से कम 10 और आउटलेट्स का पोटेंशल है। ड्रीम हमारा 100 आउटलेट्स का है इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में। तो हैदराबाद तक हम जा चुके हैं, अब लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर और बाकी जगहों पे जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आप मैंने फेसबुक पे पोस्ट देखी थी, आपके बरिस्टा ट्रेनिंग एकेडमी है और सोवेनियर, आपकी कोई गिफ्ट शॉप भी है शायद, कोई मर्चेंडाइज भी है आपका, उसके बारे में बताइएगा। जी, वो बहुत अच्छा हुआ आपने पूछ लिया। तो हमने जो है वो कॉफ़ी वगैरह एकेडमी लॉन्च की, क्योंकि हमसे लोग ये रिक्वेस्ट करते थे कि हम दूसरे कॉफ़ी शॉप्स के लिए अगर बरिस्ता को ट्रेन कर दें, दूसरे कॉफ़ी शॉप्स और रेस्टोरेंट्स वालों के लिए कस्टमर सर्विस ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकें, उनको मार्केटिंग की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकें। तो ये सब हमसे रिक्वेस्ट आती थी, तो हमने एक प्रॉपर्ली एकेडमी लॉन्च कर दी है जो कि यही काम करने वाली है। लोगों को कॉफ़ी बनाना सिखाना, बरिस्ता ट्रेनिंग, दूसरे रेस्टोरेंट्स के स्टाफ को कस्टमर सर्विस ट्रेनिंग, एंटरप्रेन्योर्स के लिए मार्केटिंग, सोशल मीडिया ट्रेनिंग। तो ये वो सारे काम कॉफ़ी वगैरह एकेडमी में होंगे। पहला जो हमारा एकेडमी का प्रोग्राम है वो आज कंक्लूड हो रहा है, 5 दिन का बरिस्ता कोर्स। 6 लोग आज उनको रात को 9 बजे उनका फाइनल सेशन कंप्लीट होगा, उनको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। वो आज कंप्लीट होने वाला है प्रोग्राम, उसमें 6 लोग बरिस्ता बन रहे हैं। आज बरिस्ता बन रहे हैं, सही नहीं होगा क्या ना, फाउंडेशन बरिस्ता स्किल्स उनकी कंप्लीट हो गई हैं। तो वो हो गया बरिस्ता एकेडमी की कहानी। और एक और चीज़ जो हमने कोविड में लॉन्च की वो है coffeewagera.com/shopping, क्योंकि लोग हमसे पूछते थे कि ये बीन्स कहाँ से आ रहे हैं, हमें ये बीन्स मिल सकते हैं कि नहीं। तो हमने बीन्स बेचना शुरू कर दिए हमारे ऑनलाइन स्टोर के ऊपर। तो पहले तो हम सिर्फ वही वाले बीन्स बेचते थे जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अब हमारे पास फ्रेशली रोस्टेड बीन्स की एक बहुत लंबी चौड़ी वैरायटी है। पाकिस्तान में 2-3 रोस्टर्स से हमारे पास कॉफ़ी बीन्स आते हैं, फिर उस कॉफ़ी बीन्स के साथ हमने चॉकलेट ऐड कर दी, फिर हमने गिफ्ट आइटम्स ऐड कर दिए, और सबसे ज़बरदस्त बात उसमें होम ब्रूइंग इक्विपमेंट भी मिलता है। अब फ्रेंच प्रेस, मॉका पॉट, केमेक्स, तो वो सारी चीज़ें मिलती हैं हमारे ऑनलाइन स्टोर पे। ऑसम। और आप कोई मैसेज देना चाहेंगे कॉफ़ी ड्रिंकर्स को या इन जनरल पाकिस्तान को, कोई भी अपलिफ्टिंग मैसेज या इंस्पिरेशनल? तो एक जो सवाल बहुत कॉमनली पूछा जाता है हमसे वो ये है कि हम इतने हैप्पी क्यों रहते हैं, हम इतने पॉजिटिव और चीयरफुल क्यों रहते हैं। तो उसका जवाब तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन छोटा सा उसका जवाब ये है कि हमें बहुत मज़ा आता है उस काम में। जब इंसान वो काम करता है जो उसको करने का शौक़ हो तो ज़ाहिर है वो खुश रहता है। और हम जो है वो अपने स्टाफ को हैप्पीनेस की ट्रेनिंग भी देते हैं, और हम अपने स्टाफ को रिस्पेक्ट देते हैं, टाइम पे करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, उनको आगे बढ़ने का मौका देते हैं, और हमारा स्टाफ भी हैप्पी और मोटिवेटेड रहता है, और हम भी हैप्पी और मोटिवेटेड रहते हैं। और हमारी कोशिश ये है कि जो कस्टमर यहाँ पे अंदर आए वो हैप्पीनेस लेवल उसका थोड़ा सा ऊपर हो जाए यहाँ से जाने के बाद। Well, thank you for your inspirational message, and inshallah hopefully everything work out for the best, and may you get success in the future. Thank you. Let's enjoy some final steaming coffee making moments. Let me go. Filling the lungs inside you, and the blackened eyes make my way into your mind. Just to know what you knew. Restless every time we start locking eyes. Lost control. Oh, it's paradise with honesty, but I'm in the dead of the night. Let the darkness take control. Let the darkness take control. Time flies when you're having fun. And with that final note, let's say goodbye for now and take care. Take me in small.